गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear students, as you all know that today is the Teachers' Day. Globally, this Teachers' Day is celebrated on 5th October, but India Teachers' Day are celebrated on 5th September to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, second President, first Vice President of India. He was also awarded Bharat Ratna Award. This Teachers' Day is celebrated to honor the teachers, to remember their significant contribution in shaping the life of the students and the country. It is commonly said that future of the nation lies in the hand of children, and teachers as a mentor can mold students into future leaders who shape the destiny of the country. They play important role in our lives to become successful in career and in business also. They help students to become a good human being, a better citizen of the society, an ideal human being, ideal member of the society. In materialistic world also, we can say that teaching is a profession that teach all the professions. हमें किसी भी क्षेत्र में जाना हो, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय अपनाना हो, टीचिंग का उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन ए टीचर बिकॉज टीचर्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द क्लासरूम टीचिंग और गाइडिंग स्टूडेंट्स in their academics, but teachers also helping students to choose the right path and value to their character and in making good citizen for the country. Education starts at home. Our fathers and mothers are our first teachers, but as we go outside, teachers are our second parents. They shape our future. They are source of light in the world. Teachers are the source of life in the world which was darkened due to ignorance. So teacher removes darkness and shows the right path in our lives. Teachers are true pillar of our society. They are true pillar of the success. They helps to grow knowledge, improve our skills, grow confidence and help in choosing right path. जैसा कबीर दास जी ने भी कहा है कि गुरु शिष्य शिष्य कुंभ सम गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट. कबीर दास जी भी ये कहते हैं कि गुरु कुंभार की तरह से है और शिष्य कुंभ की तरह से है. जिस प्रकार कुंभ को सही स्वरूप देने के लिए कुंभार भीतर से हाथ का सहारा देते हुए बाहर से चोट मारता है, ठीक उसी तरह से गुरु भी शिष्य को कठोर अनुशासन में रखते हुए उसके भविष्य को संवारने में मदद करता है. गुरु शिष्य के जीवन को संवारता है, उसको उचित सेप देता है जिससे कि वो अपने जीवन में आगे कुछ कर सके. यद्यपि इस कठोर अनुशासन से कभी कभी
आपको लगता होगा कि गुरु हमारे प्रति कठोर है, लेकिन वो कठोरता दिखाता है, अनुशासन में रखता है आपको, इसलिए कि आपका भविष्य सुधर सके। एक संस्कृत में श्लोक है कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अज्ञान और अंधकार को दूर करने के लिए गुरु हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ऐसे गुरु को हमारा बार बार प्रणाम है। लेकिन बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, डिस्पाइट प्लेइंग a very important role, a very critical role in our lives, in the lives of students and also in nation building, teachers' work are rarely shown gratitude that they deserve. जैसा सम्मान उनको मिलना चाहिए वैसा सम्मान उनको मिल नहीं रहा है। So it is our duty to be humble, polite and thankful to our teachers, and for doing so, this Teachers' Day is an ideal opportunity. So thanks to our respectful teachers. Happy Teachers' Day.